हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैं आपको बोली थी कि हम अगले वीडियो में पोर्शिया का जो स्वेटर्स देखने को आए थे उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। तो देखेंगे लास्ट तक तो आप समझ जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Portia, I pray thee, overname them, and as thou namest them, I will describe them and according to my description level at my affection। तो पोर्शिया कह रही है नेरिसा को, तो आप स्वीटर्स का नाम बोलो तो मैं आपको बोल दूंगी उसका डिस्क्रिप्शन, उसको कैसा लगा मेरे को। ठीक है। देन नेरिसा कह रही है फर्स्ट देयर इज अ नेपोलिटन प्रिंस, the prince which is from Naples live in Naples। Portia, that's cold indeed, for he doth nothing but talk of his horse, and he makes it a great appropriation to his own good part that he can show him himself। तो नेपोलिटन प्रिंस को क्या कह रहे कि वो तो एक ही उसका जो, और जब भी उसके साथ कोई भी बात करो तो वो ऑलवेज उसका हॉर्स के ही बात करते हैं। तो हॉर्स कैसा है, उसका क्या क्या पार्ट्स है उसके, ही इज लाइक अ वाइल्ड यंग हॉर्स। ही डोंट टॉक अबाउट हिमसेल्फ, ही ओनली टॉक्स अबाउट हिज हॉर्स। He is just like a horse. Nerissa is telling, then is there the county palatine? County palatine, तो काउंटी पैलेटन स्वीटर्स है। पोर्शिया बोल रहा है ही डथ नथिंग बट अ फ्राउन एज हु शुड से। तो वो एक क्रेजी मैन है, एंड एज शुड से, एंड यू विल नॉट हैव मी चूज, ही हियर्स मेरी टेल्स and don't ask me for him to choose as a husband, and smile. His smiles are just like a crazy, and I fear he will prove the weeping philosopher when he grows old। तो पोर्शिया कह रहे हैं कि जब भी वो बूढ़ा हो जाएगी तो कैसे यंग में ही कैसे बकता है, कैसे क्रेजी है, तो जब भी वो बूढ़ा हो जाएगी तो कैसे बकेगा। Being so full of unmannerly sadness in his youth, वो अब जवान है, अभी भी जवान में ही सैडनेस है, तो जब वो ओल्ड हो जाएंगे तो तब भी वो सैडली रहेगा। I had rather be married to a death's head with bone in his mouth than to either of these। God defend me from these two। तो मैं तो इससे अच्छा, indeed I will marry to a dead man's head that never be talk and never will talk to me as like that of him। And she is telling that God give her freedom to not choose he as a husband। Nerissa, how say you by French Lord Monsieur Lebon? फ्रेंच लॉर्ड मॉन्सियर लेबन को कैसे डिस्क्राइब करोगी? पोर्शिया, गॉड मेड हिम एंड देयरफॉर लेट हिम पास फॉर अ मैन, इन ट्रूथ आई नो। नेरिसा अब आक्स करते हैं जो हाउ से यू बाय फ्रेंच लॉर्ड मोन्सियर लेबन। पोर्शिया, God made him and therefore let him pass for a man. In truth I know it is a sin to be a mocker, but why he hath a horse better than the Neapolitan, a better bad habit of frowning than the county palatine. He is every man in no man. If a throstle sing, he falls straight a capering, he will fence with his own shadow। If I should marry him, I should marry 20 husband। तो बोल रहा है ये तो उससे भी ज़्यादा क्रेजी, पागल, उससे भी ज़्यादा ख़राब आदमी है, तो उसको गॉड बनाया है। तो हम तो बोल ही नहीं सकते वो एक मैन भी है, और क्या मैन ही नहीं है। he has no personality, he has no characteristics। when he want to sing, when he sings, then he jump about, and he would draw word against his own shadow। तो पोर्शिया कह रही है जब भी मैं उसको मैरी करूँगी तो मैं इससे अच्छा 20 हस्बैंड को मैरी कर लूँ। इफ़ ही वुड डिस्पाइज मी आई वुड फॉरगिव हिम, फॉर ही इफ ही लव मी टू मैडनेस आई शैल नेवर रिक्विट हिम। तो बोल रहे हैं जो वो अगर मुझसे प्यार करती है करेगा तो मैं उससे कभी भी प्यार नहीं करूँगी।
I shall never requite. I cannot give him the answer of his proposal. She is saying now. Nerissa, what say you then to Falcon Prince, the young Baron of England? What you will say about the Falcon Prince, the young Baron of England? Portia. You know I said nothing to him, for he understand not me nor I him. He hath neither Latin French. तो बोल रहे इसके साथ तो मैं कभी भी I will not talk about him because I don't understand his language and he also not understand my language. There is always a misunderstanding, misconception. He hath neither Latin nor French. उसको तो कोई भी भाषा नहीं याद रहता है, नॉर इटालियन, एंड यू विल कम इन टू द कोर्ट एंड स्वेट दैट आई हैव अ पुअर पेनीवर्थ इन इंग्लिश. ही इज प्रॉपर मैन्स पिक्चर बट आल्स हु कैन कन्वर्स विथ अ डम शो. हाउ ऑडली ही इज सूटेड. आई थिंक ही बॉट हिज डबलेट इन इटाली, हिज राउंड हॉर्स इन फ्रांस, हिज बोनेट इन जर्मनी, हिज बिहेवियर एवरीवेयर. तो बोल रहे हैं कि मैं इससे कैसे शादी मैरिज करूँगी, तो जिसको कोई भी भाषा ही नहीं है, उसका तो इंग्लिश भी पुअर है. एंड आई थिंक ही बॉट हिज जैकेट फ्रॉम द इटाली, हिज ट्राउजर फ्रॉम फ्रांस, हिज कैप फ्रॉम जर्मनी एंड हिज मैनर्स फ्रॉम एवरीवेयर. तो उसको कुछ भी नहीं आता है. नेरिसा, व्हाट थिंक ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर. स्कॉटिश लॉर्ड के क्या बोलोगे तुम बारे में. पोर्शिया, दैट ही हैड अ नेबरली चैरिटी इन हिम, फॉर ही बोरोड अ बॉक्स ऑफ ईयर ऑफ इंग्लिश मैन एंड सोर ही वुड पे हिम अगेन व्हेन ही वॉज एबल. आई थिंक द फ्रेंच मैन बिकेम ही श्योरिटी एंड सील्ड अंडर फॉर अनदर. तो पोर्शिया कह रही है ही हैज़ लव फॉर नेवर. ही डोंट लव पोर्शिया, ही हैज़ लव फॉर नेवर बिकॉज ही रिसीव्ड अ ब्लो ऑन हिज फेस फ्रॉम इंग्लिश मैन, swore that he would return it and when he was able to do so. Nerissa, how like you the young German, the Duke of Saxony nephew? Portia, very wildly in morning when he is sober. He is terrible in morning, so that means he is always drunk. He is drunk person, and most wildly in afternoon when he is drunk. He is also worst in afternoon when he is drunk, and when he is best, he is little more than a man. When he is best, he is always worse. Not in afternoon, not in he is always bad behavior. And when he is beast, he is little better than a beast, and the worst fall that ever fall. I hope I shall make a shift to go without them. तो यहाँ पर पोर्शिया कह रही है तो वो तो ऑलवेज ड्रंक ही रहता है. जब भी ड्रंक नहीं करता है वो तब सोबर होता है, और जब ड्रंक करता है तो ऑलवेज अ वर्स्ट पर्सन. And then Nerissa is saying, if you should offer to choose the right casket, you should refuse to perform your father's will. If you should refuse to accept him. तो नेरिसा आप कह रही है कि आप तो आपको फादर को ऑलवेज you have given respect to your father and never refuse your father's any advice. So if you have to, if they win the casket, if you have to choose, because your father has given the will that the man who will choose the casket, he will your husband. So if this type of people, if they choose, then she is your wife, you will be their wife. So you have to maintain your father's will or father's advice. Portia, therefore, for fear of worst, I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on contrary casket, for if devil be within and that temptation without. तो पोर्शिया कह रही है मैं तो अपनी फादर को तो मानूंगी, पर मुझको तो गॉड ने बचा ही दिया, मुझको तो ये सब नहीं करना पड़ा. ठीक है. नेरिसा कह रही है, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दिस लॉर्ड्स. दे हैव acquainted me with their determination, which is indeed to return to their home and to trouble you with no more sweet, unless you may be won by some other sort than
than your imposition depending on the casket. So you need not to be worried, ma'am or madam, that they haven't choose any right casket and you have not to marry them. No need not to be married. Then Portia is telling, if I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste as Diana, unless I be obtained. Parcel of words are so reasonable, for there is not one among them. But I dote on this very absence. I pray God grant them a fair departure. तो यहाँ पर पोर्शिया कह रही है कि मैं जब तक जीवित रहूंगी आई विल बी ओल्ड एज लाइक सिबिला एंड आई विल डाई लाइक एज द डायना अनलेस आई ऑब्टेन बाय मैनर ऑफ माई फादर सिल. तो वो कह रही है कि मैं कभी भी मेरा फादर को कभी भी रिफ्यूज़ नहीं करूँगा. तो पोर्शिया कह रही है तो मैं आई विल प्रे टू गॉड दैट दे हैव अ हैप्पी जर्नी. Then Nerissa, do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar, and the soldier that came hither in company of Marquis of Montferrat? तो पोर्शिया को नेरिसा कह रही है जब आपका फादर जब जीवित रहे थे तब आपको उस लड़के को याद नहीं है. तो यहाँ पर किसका कह रहे हैं, बसानियों का. पोर्शिया जो उससे have always have a love. Portia, yes, it was Bassanio, as I think so was he called. Nerissa, true madam, he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady. तो पोर्शिया कह रही है कि नेरिसा कह रही है कि yes, he is well known and well person, that he will deserve you. He has the power to deserve you and he has the love for you. Portia, I remember him well and I remember him worthy of thy praise. Enter a servant. How now? What's the news? Servant of enter karte. How now? What's the news? Serving man, the four strangers seek for you, madam, to take their leave, and there is a forerunner come from a fifth, the prince of Morocco, who brings word the prince his master will be here tonight. तो सर्वेंट क्या कह रही है कि आपका जो आपको देखने के लिए एक मोरक्को का राजा आया है. That he is saying that he will be the prince of the Belmont, but it's not true. Portia, if I could bid the fifth welcome with so good heart as I can bid the other four farewell, I should be glad of his approach. If he have the condition of saint and complexion of a devil, I rather he should strive me than avoid me. Come, Nerissa, Sira, go before, whilst we shut the gate upon one word, another knocks at the door. तो पोर्शिया कह रही है जब भी मैं एक डोर बंद करती हूँ तो कोई ना कोई another knocks at the door. तो ये था आपका सीन 2 एक्ट 1 सीन 2 अब आज ख़त्म मैं कर दिया. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, like, share and subscribe, and if you have any doubt please comment me in comment section and stay tuned for the next video.